स्टूडेंट्स, कल उन्होंने डिस्कस किया होता पिन आउट डायग्राम ऑफ 806 माइक्रो प्रोसेसर। उसकी हमने कॉमन पिन्स डिस्कस की थी जो कॉमन होती है मिनिमम मोड में भी और मैक्सिमम मोड में, है ना। तो अब जो 32 पिन्स हम डिस्कस कर चुके थे, अब 8 पिन्स बची हुई हैं 24 से लेके 32। पिन नंबर 24 से लेके पिन नंबर 32 तक की जो पिन्स हैं, ठीक है, उनके मिनिमम मोड में फंक्शंस अलग होते हैं और उनके मैक्सिमम मोड में फंक्शंस अलग होते हैं। ठीक है, उनके मतलब ईच पिन हैज द डुअल फंक्शन। मिनिमम मोड में फंक्शन अलग होगा, मैक्सिमम मोड में फंक्शन अलग होगा। तो हमें उनको डिस्कस करना है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि 806 माइक्रो प्रोसेसर दो मोड में ऑपरेट हो सकता है, मिनिमम मोड में और मैक्सिमम मोड में। मिनिमम मोड में ये वर्क करता है एज अ सिंगल प्रोसेसर और मैक्सिमम मोड में ये वर्क करता है एज अ मल्टी प्रोसेसर, राइट। सो दो मोड होते हैं, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। सो 33 पिन, pin number 33 is used to decide that the microprocessor will operate in minimum mode or in maximum mode. When this pin is high, means it will work in minimum mode. When this pin is low, it will work in maximum mode. So pin number 33 आपका डिसाइड करता है मिनिमम मोड में हुआ है मैक्सिमम मोड में। अब सपोज को हमने पिन नंबर 33 को हाई कर दिया, मतलब हमारा 806 माइक्रोसॉफ्ट वर्क करेगा किसमें, मिनिमम मोड में। मिनिमम मोड में वर्क करेगा तो पिन नंबर 24 से लेकर पिन नंबर 32 तक की पिन के फंक्शंस अलग होंगे, है ना। तो फंक्शंस हमें उन पिन के फंक्शंस पढ़ना है मिनिमम मोड में, क्योंकि तब उनके फंक्शन मिनिमम मोड में होंगे। तो पिन नंबर 24, पिन नंबर 24 यूज होती है INTA बार। किस लिए होती है INTA बार? इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। INTA बार का मतलब होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि माइक्रोप्रोसेसर को दो तरीके से हम इंटरप्ट कर सकते हैं। दो पिंस होती है इंटरप्ट करने के लिए, NMI और INTR, जहाँ पे INTR मास्क केवल इंटरप्ट है। तो माइक्रोप्रोसेसर को यदि हम INTR सिग्नल के थ्रू इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर रिस्पॉन्स में, उस INTR के रिस्पॉन्स में उस डिवाइस को, इंटरप्ट डिवाइस को एक सिग्नल भेजता है जिसको बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, है ना। इट इज जस्ट एज एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। ये बताता है कि उस डिवाइस, जिस डिवाइस ने माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट सिग्नल भेजा है, उस डिवाइस की इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। So through this signal, microprocessor indicates the corresponding interrupt device that its interrupt request has been accepted. So it is nothing, it is an interrupt request, it is interrupt acknowledgement signal, INT बार। नेक्स्ट है हमारा पिन नंबर 25 ALE। ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल। एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल होता है तो ये सिग्नल इंडिकेट करता है कि जो मल्टीप्लेक्स बस है हमारी, मल्टीप्लेक्स बस पे इंफॉर्मेशन डाटा है या एड्रेस है। चूंकि मल्टीप्लेक्स बस कैन बी यूज्ड टू कैरी द डाटा एज वेल एज एड्रेस, but at a time those bus will carry either address or data. So through this signal microprocessor indicates that at that time there is an address on those buses. So when this signal is high, it indicates that the valid address is available on those buses. ठीक है, and this signal is also used to enable the address latches to save the address. So ALE signal is address latch enable signal. Next है हमारा DEN, data enable signal. 26 pin is used for data enable signal. So DEN, data enable signal, is used to enable the transceiver. The IC of transceiver is 8286. Transceiver is necessary to connect the data bus with the other devices, between the other devices. So DN सिग्नल ट्रांससीवर को इनेबल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा DT ऑब्लिक R bar। DT ऑब्लिक R bar signal. This signal is indicate, DT oblique R bus indicate, signal is indicate that the buses, जो multiplex bus has are carrying at the time is data or address. So when DTR signal is high, when it is high means data is transmitted out, माइक्रोप्रोसेसर से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। When this signal is low, data is received.
तो मतलब माइक्रोप्रोसेसर से डाटा हम बाहर भी भेजते हैं, बाहर से डाटा माइक्रोप्रोसेसर में भी आता है। सो व्हेन दिस सिग्नल हाई मींस डाटा इज ट्रांसमिटेड, मींस microprocessor transfer the data to the peripheral devices or memory. Or when this signal is low, means microprocessor receive the data. So microprocessor receive the data either from the memory or input output devices. So this signals indicate that the microprocessor is transmitting the data or microprocessor is received the data. Next है हमारा M oblique I. Next signal is M oblique I over signal. This signal is used to differentiate the operation between the memory and input output devices. Memory and input output devices. Pin number 20 is used. So microprocessor can perform read operation or write operation from the memory as well as from the input output devices. So it is necessary to differentiate that the read operation is microprocessor wants to perform the read operation from the memory or input device, or write operation to the memory or output device. So to differentiate this, microprocessor use M oblique I over signal. When this signal is high, when this signal is high, this indicates that this is a memory related operation. मतलब memory is accessed or relation will memory related operation. When this signal is low, means this is a input output related. So if the M oblique I over signal higher, it will indicate that it is a memory related operation, or if this signal is low, it indicate that it is a input output related operations. Next is pin number 29, which is used for write to generate the write control signal. So microprocessor can perform mainly two operations from the input output device of memory. Either it is a read operation or it is a write operation. So to differentiate it, Microsoft also generate the control signals. So pin number 29 is used to generate the control write operation, to generate the control signal for write operation. So when Microsoft wants to perform the write operation either from the memory or input device, so sorry output device, so this the signal on this pin becomes low because it is a low enabled signal. Because it is a low enabled signal, so when the microprocessor wants to write the data either to memory or output device, this signal becomes low. The signal on this becomes low, will indicate that it is a write operation. Next, HLDA and HOLD. HLDA and HOLD, 32 pins or 30 pins. These two pins are used, where both these two pins are used when the microprocessor communicates with the DMA controller. With the DMA controller, means direct memory access controller. So when the microprocessor will when the DMA controller, sorry, when the DMA controller is transfer wants to transfer the data between the memory and input output devices, between the memory and input output device, it required the buses, and the control of the buses and is governed by the microprocessor. ठीक है, मतलब माइक्रोप्रोसेसर के पास बसों का कंट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन तो जब भी डीएमए कंट्रोलर को whenever the DMA controller wants to access the data between the memory and input devices, it required the buses, but control on the buses has the microprocessor. So DMA controller requests the microprocessor to use the control of the buses to transfer the data. So DMA controller requests the microprocessor through the hold signal. DMA controller sends hold signal to the microprocessor. Through this signal, DMA controller requests the microprocessor to leave the control on the buses so that DMA controller can use the buses to transfer the data. So, hold signal will be sent by the DMA controller, to whom it is sent to the microprocessor. For why? Through this, it will indicate the microprocessor that it wants to use the buses to transfer the data between the memory and input devices. So this is the function of hold signal, है ना? So in the response of hold signal, microprocessor generates HLDA signal. Microprocessor generates HLDA signal. HLDA means hold acknowledgement signal. It is a hold acknowledgement signal. Through this signal,
microprocessor indicates the DMA controller that its acceptance, its hold request has been accepted. ठीक है, डीएमए कंट्रोलर ने माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजी थी होल्ड सिग्नल कि आप प्लीज बस के ऊपर से कंट्रोल छोड़ दो। तो माइक्रोप्रोसेसर बता, तो इस सिग्नल के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर डीएमए कंट्रोलर को बताता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो माइक्रोप्रोसेसर ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन microprocessor will definitely leave the control on the buses for the DMA control. So it is actually it is a hold acknowledgement signal. Again, through this signal, it will indicate to the DMA controller that its uh, hold request has been accepted. Next is, so these are the pin configuration for minimum mode is completed, and the pins for maximum mode. So QS1 and QS1 pin number 24 and 25. ठीक है, in maximum mode the function of these pins are used as these function of these pins are used to show the status of the queue. As we know that in bus interface unit we have a instruction queue. बस इंटरफेस यूनिट में एक इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, तो ये दो पिंस उस इंस्ट्रक्शन क्यू के स्टेटस को शो करती है। सो कैसे शो होता है ये स्टेटस? इफ बोथ इनपुट्स आर 0 0 मींस नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यदि 0 1 फर्स्ट बाइट ऑपकोड फ्रॉम द क्यू, मींस जो ऑपकोड की फर्स्ट क्यू की फर्स्ट बाइट है वो क्या है? ऑपकोड है। If this signal is 1 0, it will indicate queue is empty. There is no information here, no data is, no instructions is available in the queue. Queue is total empty. When this signal is 1 1, subsequent byte from the queue means the instruction has more than one byte. So one, it will through this signal it will indicate that it will fetch the subsequent byte from the queue. So generally QS1 and QS0, these two pins are used to show the status of the instruction queue. Next is S0, S1 and S0 bar. These three pins are generally used the status signals, indicate the status signals of the operation being done by the microprocessor. Microprocessor uh, performs different types of operation, so the status of those operations is uh, indicated by these status signals. So for example, if these signals are 0 0 0, if these signals are 0 0 0, interrupt acknowledgement signal will be generated in maximum mode. If this signal is 0 0 1, input output read operation, 0 1 0, input output write operation, 0 1 1 halt, 0 1 1 opcode fetch, memory read, memory write, basic. So these are the different operations which will be performed by the microprocessor. So those operations will be, status of those operations will be indicated by the status signal. Next, next is lock pin. Lock pin is generally used to lock the buses in maximum mode. Lock signal is used. The control signal generated on this pin will be used to lock the buses. If suppose microprocessor wants to perform a urgent operation, a very, and at that time microprocessor will not uh, give the permission. Microprocessor will not give the permission to the use of buses by the other processor. So Microsoft will lock those buses for other processor, and to lock the buses microprocessor will generate the lock signal. So when the signal on this pin is low, the buses will be locked, and the buses will be locked. No other devices can use the buses at those time. So the function of lock signal is used to lock the buses. Next, 30 and 31 pins, 30 and RQ oblique GT1, RQ oblique GT not. Request or grant. These RQ means request, GT means grant. So these two signals are generally used for request, and these pins also used to permit the grant. मालूम है कि one can request to other
and other can grant to one. So a request or grant uh, signals can be generated on these pins. So when other processor request the processor through these lines to release the system buses. ठीक है? So after receiving the request, CPU sends the acknowledgement signal to the same lines. So these two functions is the same function as hold and HLDA. Hold and hold acknowledgement. ठीक है? So request signal is just like a hold, and grant is just like the hold acknowledgement signal. And suppose at a time two devices generate the both pins to send the request signal. So we have to given the priority. We will give the system bus to those device who has the highest priority. So in these two signals, RQ oblique G20 has the higher priority. Then RQ oblique GT नॉट की priority RQ oblique GT1 से ज्यादा होती है. तो जो डिवाइस इस सिग्नल्स के थ्रू इस लाइंस के इस पिंस पे रिक्वेस्ट सिग्नल भेजी, माइक्रोप्रोसेसर उसको पहले सिस्टम बस देगा, उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर नेक्स्ट को सिस्टम बस देगा. So these signals are generally used to. So so this is the complete of pinout diagram of 8086 microprocessor. If you have any difficulty to understand the function of any pin, you can also call to me. So then after I will try to understand you in a better way. Okay, thank you.